स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। देखो, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने सजेस्ट किया था एटम जो है वो इनडिविजिबल है। दैट मींस इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, ये डाल्टन ने सजेस्ट किया था। लेकिन जब डिस्कवरी हो गई ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, यानी डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन की, कि भाई ये एटम के अंदर है, रहते हैं उसके अंदर, इसने डिस्प्रूव किया। किसको डिस्प्रूव किया? जो पॉस्टलेट्स किसके थे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ये जो डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन्होंने सजेस्ट किया कि एटम्स जो है, एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल एंड दे डू हैव एन इनर स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहली बात उन्होंने कहा, सबसे पहली चीज वो ये थी, वो ये था कि एटम्स आर डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबल होने के साथ साथ इसका क्या है? दे हैव इनर स्ट्रक्चर, एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर है इसका, किसका? एटम का एक पूरा स्ट्रक्चर है, दे हैव इनर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब जब डिस्कवरी हो गई कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये जरूरी नेसेसरी हो गया कि चलो भाई ढूंढते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज होते हैं इस एटम में। डिस्कवरी तो हो गई इसके अंदर है, फिर उसके बाद ये जरूरी हो गया देखना कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरह से अरेंज है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज नोट करना कि थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल भी है न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे स्टडी हो रही थी ना, उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। जिस टाइम पे स्टडी हो रही थी कि ये दोनों कहां पे लोकेट करते हैं एक एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उस टाइम पे जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर नहीं हुई, इट वाज येट टू बी डिस्कवर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जे जे थॉमसन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया, एक मॉडल उसने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। तो हु वाज दैट? इट वाज जे जे थॉमसन। इसको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जे जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल प्रपोज करा, ठीक है। इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल प्रपोज करा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, उसका जो स्ट्रक्चर है, कहां पे लोकेट करता है, अंदर प्रोटॉन, कहां पे इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उस टाइम पे कौन सा सब पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ था? न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। सो अब दिस इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो। अब आ गया, ऑब्वियसली जब इसे एक मॉडल दिया तो उस मॉडल का नाम आ गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। उस मॉडल का नाम आ गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। हाँ, ये इसे जो मॉडल दिया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आ गया तभी जब इसने देखा, इसने बताया स्ट्रक्चर के बारे में। अब जब जे जे थॉमसन ने प्रपोज किया ये मॉडल, इसने ये थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, डेट याद रखें 1903, ठीक है। इसने दिया था उसी टाइम पे मॉडल प्रपोज किया था इसने। दैट मींस उसी टाइम पे ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है, ये पता चल गया लोगों को कि भाई एटम के अंदर ये रहते हैं, ये तो है पहली चीज क्लियर। लेकिन अगर हम अब इससे खास चीज क्या होती है, इसको वही दिखाना था कि भाई कहां पे रहते हैं उसके अंदर। अब अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसने कहा एक एटम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और अ बॉल, ठीक है। सो हाँ, इसने बोला ये एटम है, ये कंसिस्ट करता है एक स्फीयर या बॉल का, और उसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। क्या है, समझना इस बात को, इस लाइन एक पॉइंट को समझना। और इसने बोला एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और अ बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो with negatively charged electrons embedded in it, with negatively, हाँ, मैंने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल, एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, समझना इस बात को चाहिए, ऑफ पॉजिटिव चार्ज with negatively charged electrons embedded in it, embedded वर्ड समझते हो, embedded मतलब को अंदर डालना, ठीक है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज with electrons embedded in it. An atom, इसने बोला था स्ट्रक्चर पे से बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल, इसने बोला था एटम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल और अ स्फीयर,
Atom consists of a ball और sphere. लेकिन सबसे बड़ी बात किसका? ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज with negatively charged. हाँ, positive charge, negative charge. Atom consists of a ball or sphere of positive charge. इस बॉल का जो चार्ज है ना, जो पॉजिटिव, ये बॉल है, इसका ये जो चार्ज स्क्वायर का पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से सब जगह पे पॉजिटिव 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 चार्ज है, ठीक है? ये एटम consists of a ball of a sphere of positive charge with negatively charged particles embedded in it, अंदर आ गए, यही तो है इलेक्ट्रॉन। with negatively charged particles called embedded का मतलब क्या होता है? embedded इसके अंदर, embedded called electrons inside its pick, ठीक है? inside it, ठीक है? अब हम पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर दो। सेकंड पॉइंट जो उसने बताया, वो बताया the positive and negative charge, the positive and negative charge in an atom are equal in magnitude. Equal in magnitude. अच्छा. Positive and negative charge, positive and negative charge in an atom, are equal in positive and negative charge are equal in magnitude. कोई बता सकता है इसका मतलब? Positive and negative charge are equal in magnitude. मतलब एक बोलो, मैं शायद से एक मिनट, मैग्नीट्यूड शायद से मैं बता सकता हूँ। हाँ, मैग्नीट्यूड का अगर मतलब होता है ना कोई फोर्स, शायद से मेरे ख्याल से जो मैग्नीट्यूड होता है ना, close mic. So if I talk about the magnitude, मैंने बताया कि पॉजिटिव, ये इसका मॉडल का एक दूसरा पॉइंट था, positive and negative charge in an atom are equal in magnitude. It means that if there are 10 positive protons, there must be 10 electrons as well. The positive and the negative charge in an atom are equal in magnitude. Magnitude means value, number. Magnitude is a number. Fine. So he said that means due to this particular property, atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. Atom is neutral. Why neutral? Equal number of protons, equal number of electrons. Yes. He said that an atom has equal number of positive charge and negative charge inside it with equal magnitude. Which means if we take one atom, inside that one atom, there are 10 protons, 10 electrons. That means there is a balance of protons and electrons. And because of the balance of protons and electrons, atom is electrically neutral. If there would have been, one would have been higher, it would never have been a balance. So obviously we can say that it is more electrically negative. If protons would have been more, we would have said it is more electrically positive. But because of the balance of protons and electrons inside the atom, we say that atom is electrically neutral. That means positive and negative charge in an atom are equal in magnitude. So that means we can say that it has no overall positive or negative charge. It has no overall or negative charge. No positive, no negative. Does it show any positive or negative charge? No. Why not? Because both are in balance. Positive, there are 10 positives, there are 10 negatives. So that is why it does not show any charge. It does not show any charge. So we can say that there is no overall positive or negative charge. There is no overall positive or negative charge. And the answer for that, why? Because the positive and negative charge in an atom are equal in magnitude. This is first basic thing, that every atom has
equal number of protons, equal number of electrons. That's a different story, but don't get confused at later stage. Whenever I tell that I'm taking one electron out, I'm taking one proton out, there's a change in atom. It becomes right now it is neutral or balanced. It becomes unbalanced at that point of time. It shows some certain charge. But when we come to the basic term, the very first point here it is that an atom contains equal number of protons and equal number of electrons. And because of this particular balance, atom has no overall positive or negative charge. Perfect? Clear? Any doubt? Shorter. So there he has shown the look how I was telling you about the embedded thing and everything. So take for example, as I showed, the positive charge are outside or anything like that. Like we will see, we will shade this part. Inside, it is the structure of the atom. We will shade this part. Once we shade this part, the shaded part is the protons. The shaded part is the protons. Fine, shorter. For a second, neglect all the negative electrons out there. So the shaded part is proton. This is an atom, structure of atom. The shaded part is proton. So that means now these beads, we can say beads exactly. These are electrons. These negatively charged electrons are spread throughout the positive charge. They are spread throughout the positive charge. Like how? Here it is proton, electron is close to it. Here it is proton, electron is close to it. It is spread. Don't you see that it's everywhere? Although I have not made it here, but we can make it here. We can make it here. So it is spread. It is spread. Electrons are spread throughout the atom. Don't get confused with what that I told you that it will just make you understand that what embedded means. So this is the structure of an atom. The shaded part is the protons, fine, clear, positive charge. Now I said that negatively charged particles are embedded in it. These are the negatively charged, and they are spread throughout the atom. Perfect, clear, sorted. They are spread throughout the, we can say throughout the atom, or they are spread throughout the positive charge. जहां जहां पे positive charge है वहां पे ये है. Sorted, clear, two things we can say. So here, as I said, the shaded part contains all the positive charge in an atom, and the negatively charged electrons are spread throughout the positive charge. Negatively charged particles are spread throughout the positive charge. Now the point here is the total negative charge of electrons, the total negative charge of electrons here is equal to the total number of positive charge of the sphere. The total negative charge, we have this diagram with us. The shaded part is proton. Electrons are embedded in it. So I see here the total negative charge of this atom. This is XYZ atom. This is atom X. The total negative charge, the overall negative charge of this atom, negative. The total negative charge of this atom is equal to the total positive charge of the sphere. The total negative charge of this atom, कितना नेगेटिव चार्ज इस एटम का है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 10 इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर. इस स्फीयर के अंदर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है? शॉर्ट है ना? शॉर्ट है. टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम, टोटल नेगेटिव चार्ज, ये वही बात है मतलब बराबर ही है दोनों में मैग्नीट्यूड. अब बस थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस समझा रहा है. टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम is equal, total negative charge of an atom is equal to the overall positive charge of the sphere. पूरे चार्ज में, पूरे स्फीयर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है. तो जब हमने पहले ही कहा कि मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पूरे अगर इलेक्ट्रॉन 10 हो तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 ही होंगे ना. 11 तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हमने तो बेसिक लाइन यही बोली थी अभी कि मैग्नीट्यूड बराबर है. तो ये वही चीज कह रहा है कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस is equal to the total positive charge of the sphere. पूरे स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज कितना? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का भी 10 ही होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है. क्लियर? सो these equal, पहली बात, these equal and opposite charge balance each other, and due to which an atom becomes, because of this particular balance, an atom becomes electrically neutral on its own. Atom अब हो गया भाई neutral. ये थॉमसन का मॉडल क्यों था? This is very good. You got it? Yes. Here this thing proves that the atom is electrically neutral. It has no overall no
more positive charge or no negative charge. Now, if they would have in a case, say for example, if instead of 10 positive negative, they would have 9 negative, 9 electrons. Which are more, electrons or protons? Electrons. You are mad. Electron is negative. Is it more positive or 10? Which is more? Proton is positive. Protons are more. Here, atom is not electrically neutral. It's not balanced. So the overall charge of this atom is which? Positive. Why positive? Because protons are more. Because protons are more. Now, if they would have a case like this, what is the overall charge of this atom? Negative. Why negative? Because there are more negative electrons inside it, and due to which, in both the conditions, if there are more electrons compared to protons, if there are more protons compared to electrons, it becomes electrically unbalanced. It becomes electrically clear. Any doubt? Any doubt? Good. So Thomson's model of atom is similar to that for Christmas pudding. So the electrons embedded in a sphere of positive charge are like the currents of dry fruits in a spherical Christmas pudding, or we can say watermelon. Take the example for watermelon. Okay? And the red eligible part, which we eat usually, the red eligible part of the watermelon represents the sphere of positive charge. It represents the red part. It considered as sphere of positive charge. The red thing that you are eating, it is positive charge that you are eating. Fine, perfect. The red part that you are that which is explain model which is mostly visible. Which is if we cut watermelon into 4 halves, the red portion of that is quite visible because that is the maximum portion that we people are going to eat or we eat. So the watermelon represents the sphere of positive charge, whereas the black seeds embedded in watermelon are like negative charge. What are those charges called? Electrons. So, although Thomson's model of atom explained the electrically neutral nature of atom, इसने explain करा कि एटम का नेचर न्यूट्रल क्यों है न्यूट्रल उनके बराबर ही है ना मैग्नीट्यूड बराबर है इसने तो ये एक्सप्लेन करे हमें भी समझ में आ गई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जवाब खत्म वन लाइन आंसर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है न्यूट्रल क्योंकि उनके दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है परफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात खत्म क्लियर इसने ये चीज तो हमें बता दी कि ये है ऐसा लेकिन उसके बाद ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट हुई थी उसके जो रिजल्ट्स थे जो बाकी साइंटिस्ट ने करे थे जैसे कि हम पढ़ रहे जे थॉमसन एक और साइंटिस्ट है उसका नाम था रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कराया उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ठीक है ये नहीं वो चीज एक्सप्लेन करा अब वो चीज ठीक है डाल्टन का थ्योरी इसमें क्योंकि वो एटम्स का स्ट्रक्चर समझा सके इसका क्यों निकला था हाँ एग्जैक्टली राइट इसने डालता निकाला ताकि ये स्ट्रक्चर समझा सके कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं इसने वो बता दिया अब इसने ये चीज तो बताई डाल्टन की थ्योरी का कोई वजह था इसकी ये किसका वजह है जे थॉमसन से पहले भी और साइंटिस्ट आ चुके थे और एक और साइंटिस्ट डाल्टन भी इससे पहले आया था इसी तरह रदरफोर्ड भी इससे पहले आया उसने भी एटम के बारे में कुछ कहा था चार्जेस के बारे में कुछ कहा था इसने डाल्टन की चीज को प्रूव करा इसकी क्यों ये सब इसने बताया हाँ, क्योंकि ये चीज डाल्टन ने नहीं बोली थी रिएक्टिव ये चीज डाल्टन ने नहीं बोली डाल्टन ने बस खाली एटम जो है वो इंडिविजुअल है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है फलाना 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 बट ये बंदा आया इसने बोला हाँ हम डिवाइड भी कर सकते हैं ये बंदा आया इसने बोला मैं बताऊंगा कि वो कहाँ पे होते भी है किस तरह से होते हैं क्या उनकी ये है इसने ये भी बताया मैं आपको बताऊंगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है ये डाल्टन ने नहीं बताया डाल्टन का एक पोस्टमेंट मेरे को बताओ जहां पे डाल्टन क्या था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहीं पे नहीं उसने बताया ड्रॉबैक्स कहीं पे नहीं बताया उसने ठीक है उसके बाद हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो आपको एक्सप्लेन करना सो ही वाज अ पर्सन हु एक्सप्लेन कि कहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे ये प्रोटॉन्स होते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और क्यों एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उस क्वेश्चन मार्क को ये आंसर है शॉर्ट अगर इसने इतना सारा बताया तो डाल्टन को क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं हाँ डाल्टन को फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शुरुआत होती है ना देखो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट किसने पहचाना जाएगा उससे जिसने जो उसका एक्चुअल लैरी पेज सुना है लैरी पेज कौन है
लैरी पेज गूगल का है ना, यूट्यूब लैरी पेज और सर्गियो ना, हाँ गूगल के फॉर्म। तो इस तरह से जो जिसने कहीं से स्टार्ट करा होता है ना कोई चीज, क्रेडिट हमेशा वहीं से जाता है। तो डाल्टन ने केमिस्ट्री में एटम के बारे में शुरुआत करी थी पढ़ने के बारे में, और तो वो कहीं कहीं पे गलत निकला, वो हमें भी पता है, लेकिन डाल्टन ने कैसे शुरुआत करी जब लॉयडर क्लाउस ने उससे भी पहले ये तो बता दिया था। एग्जैक्टली, वेरी गुड। लेवाइजन ने खाली लॉ के बारे में बताया था, बट वो एटम के बारे में ही तो था ना, पर वो था कि एक मतलब वो था कि मास में छोटी चीजें थी, बस एक लॉ दिया दैट पे बताया कि हाँ जो रिएक्शन के बाद मास है वो बराबर रहता है, उसने कहा कि जो प्रोपोर्शन है वो बराबर रहते हैं। ये जो डाल्टन है ना, इसने थोड़ी फर्दर डीप स्टडी की, और तो ये गलत है, इसने हाइपोथेटिकल चीजें लगाई थी, एटम इनविजिबल है, उसको कभी डिवाइड नहीं हो सकता है। इसने फिर वो चीज करी ना, जो गलत प्रूव हुई बाद में भी, जब ये कि भाई मास अलग होता है। हाँ हाँ, इसके बाद कुछ वही पहली जगह वहां पे लिखा है हाइपोथेटिकली तो नहीं लिखा है, पोस्टुलेट्स। मैंने वो पहले दिन लिखा था। पोस्टुलेट्स क्या होता है? एजम्पशन। मैं अभी एज्यूम करूंगा, मैं अभी एक ग्राफ बनाऊंगा एक हफ्ते का, परसों बारिश होगी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब मान के चलो मेरा तुक्का चल गया, तो जिन जिन मैंने दिन कहा था, मैंने 5 दिन कहा था बारिश होगी, 5 में से 3 दिन बारिश होगी, बस मेरा नाम आ गया। 5 दिन से 3 दिन बारिश होगी, 2 दिन नहीं हुई, लेकिन मैक्सिमम टाइम हुई ना। वही केस हो गया डाटा के साथ। डाटा ने अपनी चीजें आगे रखी, पोस्टुलेट्स रखे, assumptions रखी, कुछ चीजें उसकी प्रूव हो गई, सही है, बस he became the father of the chemistry. Short, clear? So अब मैंने back to the point, back to the part. So अब मैंने यहाँ पे बोला कि थॉमसन ने कुछ चीजें तो बताई, इसने बताया, इस पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इस पे कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसने बताया कि भाई ये चीज है तो है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो गई थी, ठीक है। एंड बिफोर वी डिस्क्राइब, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, हम रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले, ठीक है। And this is actually before we describe the first experiment, and this was the experiment which led to the discovery of positively charged nucleus in an atom. मतलब एक एक चीज ऐड होती जा रही थी। एटम्स बनने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना किस वाला से? हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना किससे? एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, वो किससे बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। ओह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो उससे भी सब बताऊं, वो इंसान ने आज तक देखी नहीं है, वो सब बताऊं। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था, इसे चुप कराया। नहीं नहीं नहीं, आई वांट मी आपने बोला कि अगर वो किसी ने देखे नहीं तो कैसे एज्यूम हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ से चुप कर। अब तू और पापा ने वो क्वेश्चन पूरा ही रिपीट कर रही है, वही सेम क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन। अरे नहीं, एक मिनट। ओके फाइन, she I'll sue you in international court. चुप हो जा। Okay, fine. So before we open, Rutherford, quite ये तुम चली जाएगी। रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ? रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चला, डिस्कवरी हुई किस चीज की? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम। यानी यहाँ पे हमें समझ, यहाँ पे हम कोई न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता है कुछ, यहाँ पे हमें प्रोग्राम, यहाँ पे हमें प्रोग्राम। लेकिन जब रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करी थी ना, रुथरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करी, उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी बैठा है। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी बैठा हुआ है। उससे पहले ये पता ही नहीं था, बस यही पता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में है, एटम बैलेंस है। ये चीज पता ही नहीं थी, ये रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चल गई कि एटम के अंदर कहीं पे न्यूक्लियस भी बैठा हुआ है, और उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, which led to the discovery of a positively charged nucleus in an atom. किस डिस्कवरी से पता चला? रुथरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। न्यूक्लियस में ना, ये याद रखना, थॉमसन ने खाली बताया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। थॉमसन ने खाली इतना बताया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करवाई? रथरफोर्ड ने। किसने? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करवाई? शाबाश, एग्जैक्टली। और एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, ये किसने बोला? थॉमसन। किस ईयर में? 1973। 73 ठीक है। सो वी शुड नो। आप एक चीज जानते हैं इंपॉर्टेंट, अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रुथरफोर्ड ने। We should know the meaning of alpha particles. ये क्या बोला? We should know the meaning of alpha particles, or we write them like this.
मैं बोलूं अल्फा पार्टिकल्स क्या है? ये चीज पढ़ी है मैंने। ये ऐसे होता है मैं alpha. बताऊं? No, wait. We should know the meaning of alpha particles. Alpha particle is a positively charged particle. याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं जाना दिमाग, ये जो कंफ्यूजन निकाल दो अभी, अभी निकाल दो, ये वरना पूरे चैप्टर में भटके गए क्या कंफ्यूजन. Alpha particle is a positively alpha positive. Feed it in mind. Alpha positive. Alpha particle is a positively charged particle. Alpha particle is a positively charged particle. Alpha particle is a positively charged particle having 2 units of positive charge. Having 2 units of positive charge and 4 units of mass. 2 units of positive charge and 4 units of mass. Alpha particle is a positively charged particle. Alpha particle is a positively charged particle having 2 units of positive charge, having 2 units of positive charge and 4 units of mass. And ये याद रखना है. So alpha particles are alpha particles are alpha particle is a positively charged particle. Alpha particle is a positively charged particle having 2 units of positive charge, 4 units of mass. 2 4 2, what is 2 unit of charge, what is 4 mass. Simple. Alpha particles are positively charged particles having 2 units of positive charge and 4 units of mass. It is actually a helium ion. It is actually a helium ion. How so? He2 positive. He is a formula of this. He2 positive. It is actually a helium ion. What is actually a helium ion? Alpha particle. Alpha particle is actually a helium ion. Alpha particles are emitted by radioactive elements. Any radioactive element coming to your mind? Radio. Exactly. There are others as well, but alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. Radium and polonium. हाँ? So कौन से दो अल्फा पार्टिकल्स किन रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलता है? रेडियम और पोलोनियम से. ठीक है. The fast moving alpha particles, जो alpha particles बहुत फास्ट मूव होते हैं, इनमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी कह ही नहीं सकते कुछ. ठीक है. इवन ये इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि मैटर के अंदर भी घुस सकते हैं कुछ हद तक. They can even penetrate into the matter. They have so much of energy, alpha particles. They can even penetrate through matter, but to some extent. We will be using a gold foil. Gold foil in this experiment. A gold foil is a very thin sheet of gold. A gold foil is a very thin sheet or paper of gold. Alpha particles are much smaller than the gold atoms present in the gold foil. We will now describe Rutherford's experiment. Coming back to this. Alpha particle is a positively charged particle. Alpha particle is a positively charged particle having 2 units of positive charge, 4 units of mass per. It is actually a helium ion, He2 positive. Alpha particles are emitted by radioactive elements, namely radium and polonium. So the fast-moving alpha particles have a very high amount or considerable amount of energy. The fast-moving alpha particles have a very high amount or considerable amount of energy. Clear? Clear. So clear. Okay. So they can even penetrate through the matter to some extent. Energy बहुत ज़्यादा है, speed बहुत ज़्यादा है. They can even penetrate inside the matter to some extent. Now, how we will prove this? How we will see this that they can penetrate inside the matter? We will use a gold foil, a paper of gold in this experiment. Why gold? Why not any other? Question comes in.
A gold foil is a very thin sheet of gold, basically. Why gold? Because alpha particles are much smaller than the gold atoms. Gold has atoms. So every element has atom. Every single element has atom. So gold also has atoms, but the size of the atom of the gold, the alpha particles, are much smaller than that. Why that this is why we use gold sheet. Why we use gold sheet? Because we use gold sheet because the atoms of the gold, atoms of the gold, alpha particles are much smaller than the atoms of the gold. They are much smaller than the atoms of the gold. That which means that they can penetrate into inside it. This door is very small. For example, a person like me cannot pass through it. But if you will wide it open so that I can pass it through, I will easily pass it through. But if you will congest it, will I be able to pass through it? No, I won't be. Same is the case with here, alpha particles. They use the gold foil experiment. Why gold? Because alpha particles are much smaller than the atom of which element? Gold, which is used in it. Alpha particles, the size of alpha particles are smaller than the size of the atom of gold. That's why he used gold. Sorted? So now we will now describe Rutherford's experiment tomorrow because this is going over here. It's 21 minutes.